Now dear students, today we are solving the ISI MS QE 2024 subjective paper. This is the number to contact me for any query, questions and class related things. So let's get started. So here a restaurant has a menu card containing of 3 Chinese item, 3 Chinese, 6 Indian, 5 continental, 6 items were selected total. Okay. 6 items selected by X and Y denote the respectively the total number of Indian and continental items selected compared to the conditional probabilities of the mass function given y equal to 3, E of x given y equal to 3. हमें ये निकालना है, दो चीज़ें निकालने हैं, ठीक है. To solve this problem we need to find the probability. Given information सारा दिया हुआ है. Step 1 है total number of ways to select 6 items from the menu card क्या है. वैसे 3 + 6 + 5 14 है. 14 में से हम लोग चूज़ करेंगे 14C6. So 14 factorial 6 और 8, so this will give you 3003. ये हमारा आ गया. अब number of ways to select X Indian items and 3 continental items from the thing. अब X Indian है, X है Indian and 3 है X Indian, 6 3 continental है items from the remaining 3. So number of ways to select X Indian items from 6 में से क्या है 6CX, ठीक है. और 3 continental from 5 continental से आएगा continental वाला 5 में से 3 5C3. number of ways of the remaining को अगर करना है remaining को करना है 6 - x - 3 remaining this Chinese items from the 3 Chinese item. So ये हो जाएगा 3C 6 - x - 3. ये हो गया. ओके, अब ये कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ P of x गिवन y इक्वल टू 3, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x y गिवन 3 इज अ नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग x इंडियन ऑफ दिस थिंग. तो ये हो जाएगा 6CX into 5C3 into 3C 6 - x - 3 whole divided by 3003. अब इसे कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन E of x y given 3, ये हो जाएगा समेशन ऑफ x P of x इक्वल टू x y इक्वल टू 3 फॉर ऑल. ओके, so here is a calculation of E of x equal to y equal to 3, x given y equal to 3 का पूरा कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, ठीक है. So this is x given y equal to 3 0, P of x equal to 0 given y equal to 3, first 1, फिर ये, फिर 2 and then 3. ठीक है. So this I have calculated all. So first one is 0 plus 10 by 301. Everyone is divided by 3003. So 301 120 and 60 by 301. So 190 by 30 and 1. Okay. This will give you 0.631. Okay, so therefore the conditional probability mass function of x, probability PMF of x is given at y equal to 3, or probability x given y equal to 3 is CX of this thing. So I see 3C6 - x - 3 by 3003. And the answer to the last question is 0.63. So that's the answer to 2A for 4.